तो आप सभी लोगों का आज के हमारे इस ज्ञान सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं दिस वेबिनार इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। और आज का हमारा विषय है गोल्ड आउटलुक। और आज के इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर देवजीत साध, प्रेशियस मेटल फ्रॉम लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, लीड एनालिसिस। हम एक छोटा सा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद देवजीत जी यू कैन कंटिन्यू द सेशन। Sure. उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। तो थैंक यू शिवन। तो आई रिक्वेस्ट टू देवजीत जी यू कैन कंटिन्यू सेशन। Thanks, people. Thanks, Saurabh, for inviting me. Thanks for the audience who are here. So, मैं थोड़ा I will try my best to speak in Hindi as much as possible. Uh, तो शुरुआत से पहले मैं एक दो चीज बोल जस्ट लाइक आई वांट टू से अ फ्यू थिंग्स लाइक मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास जितने भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। सो शुरुआत से पहले एक बैकग्राउंड मैं देना चाहूंगा कि ये जो सोने का प्राइस जो ऊपर गया है इस साल, बेसिकली अभी लास्ट ईयर भी काफी काफी इंक्रीज हुआ है। बहुत बढ़िया रैली था लास्ट ईयर का। तो उसके बाद ये जो शुरुआत की ये जो 4-5 महीने में जो सोने का जो उछाल देखा है हम लोगों ने, तो इसके लेके काफी चर्चा हुआ। हम लोग इब्जा का जो मार्च का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी काफी चर्चा किए। एंड उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ सब लोग जो भी थे उधर, आई कैन रिमेम्बर कि हम लोग काफी बुलिश अप्रोच रखा। नंबर्स थोड़ा वैलिड हो सकता है, मेरा शायद 2400 था, किसी का शायद 25-2600 था समथिंग। बट ओवरऑल जो था कि सब लोग हम लोग देख रहे थे कि बुलिश ट्रेंड सबके नजर आ रहे थे। और साथ में कुछ हम लोग वर्ड ऑफ कॉशन भी बात किए थे। तो फिलहाल अभी वो चर्चा अभी भी ऐसे ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड यही चर्चा हो रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर गोल्ड। कुछ अच्छे रिसर्च पेपर भी हम लोग देखे हैं, रिसेंटली आए हैं। एक दो का जिक्र करेंगे तो लाइक फॉर एग्जांपल समवन सीइंग दैट गोल्ड प्राइस टू हिट अराउंड $31,000। सो उनको कहना है कि $5 ट्रिलियन का यूएस डेट है, उसको फंडिंग करने के लिए ये जो पेपर करेंसी है उसको रिप्लेस करने के लिए जितना गोल्ड चाहिए, तो उसी हिसाब से some calculation has been drawn to $31,000 per ounce, something like that। ये किसी एक रिसर्च रिपोर्ट, किसी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, मेरा नहीं है या तो मेरा कंपनी का नहीं है।
बाकी कुछ हम लोग जो रोज का जो एनालिसिस करते हैं, कुछ को किसी को मानने का है कि अभी हम लोग सब जो देखते हैं कि टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली मंथली आउटलुक, क्वार्टरली आउटलुक का चार्ट हम लोग देखें तो उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस जो बेस प्लेटफॉर्म था वो काफी इम्प्रूव हुआ है, काफी इंक्रीज हो गया। तो अभी का जो प्लेटफॉर्म अभी हमको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म पे भी गोल्ड $1800 के नीचे नहीं आना चाहिए। सो इन दिस नोट अभी देखते हैं कि ये जो प्राइस है ये फंडामेंटली मींस गोल्ड इज कंसिडर्ड एज ए करेंसी, अभी बोलने का जरूरत नहीं है। ये एस्टिम्ड जो भी इधर आज आप लोग जो भी है हमारा जो ऑडियंस है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज गोल्ड बेटर देन मी आई। तो हमको बोलने का जरूरत ही नहीं है कि ये gold is a considered as a currency in the global market because it is priced in US dollar and it's a substitute to US dollar. So इसी मुद्दे पे अगर हम लोग देखें बट एट द डेज एंड उसका जो एक कमोडिटी के हिसाब से उसका जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी का आज का जो सेशन है आई विल ट्राई टू शो सम फंडामेंटल एनालिसिस ऑन द कमोडिटी साइड। बेसिस तो कमोडिटी का जो एनी कमोडिटी, इट इज नॉट अबाउट गोल्ड, एनी कमोडिटी का जो इनहेरेंट जो एक एक फंडामेंटल रहता है दैट इज द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड। पहले हम उसको थोड़ा उस पर थोड़ा नजर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे जो ये जो रैली जो हुआ है इस साल तक अभी तक एक अंटिल द प्राइस करेक्टेड शार्पली वीक्स बैक कि इसके अभी कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ हो सकता है बोथ इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। सो आई शेयर माई स्क्रीन, तो थोड़ा उस पर नजर डालते हैं कि आ, हम कहाँ पे खड़े हैं, जो फंडामेंटल है वो क्या बोलती है। Someone can tell if you can see my screen, Saurabh, or can you see my Yes, sir, screen, visible, anyone? visible. Okay. So this is my Power BI dashboard. I just wanted to present few stuff. I put it Power BI की, थोड़ा इस पे हम लोग थोड़ा खेल सकते हैं। तो फिलहाल आप जो देख रहे हो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर में जो ग्लोबल सप्लाई लास्ट 5 years का डाला है, so this is basically the supply coming from the across the continent. Why I kept it in the continent? Because to make it more reliable, to make it more granular कि ये जो माइनिंग जो है, गोल्ड माइनिंग जो है, कहाँ पे हम लोग खड़े हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए कि दिस इज फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट एशिया, सो एशिया का जो माइनिंग हम लोग देख रहे हैं, सो ये एशिया का माइनिंग लास्ट 5 years में एक सर्टेन लेवल पे खड़े है। इट हैज नॉट इंक्रीज्ड। और अगले का जो 3 साल का जो हम लोगों ने फोरकास्ट इधर डाला है इसमें भी हम लोग बहुत सारा कुछ माइनिंग अभी तक का जो माइनिंग का जो गोल्ड जो प्रोजेक्शन है उसी बेसिस पे वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग एनी बिग राइज इन द फ्रॉम द सप्लाई साइड इन द एशियन जोन। Same way, if I look at Africa, how Africa is showing, Africa is showing also the similar trend. With a 3 years forecast, we are anticipating some downward slope, not a good too much on a yearly basis. So if I go to the this Latin America, Latin America has done well, and North America is the one continent where we can see some uptick in next 3 years. And even in the last 5 years, North America has done fairly well in respect of the production side. Oceania, we are expecting some downward trend in next 3 years. Of course, some of the mines are getting old in the Oceania region. And at the same time, we should keep it in our mind that in recent years, no major big mines discovered. And as per the ongoing information we have, we are not expecting any major mines coming. So whatever the supply will come, you have to depend on the already existed mine. Some of the locations, mines are getting old.
So obviously over a period of time, already say for example in South African region, mines has gone very deep. It is not economically viable to extract gold like it used to be in the past. So our coming days, there is more depletion will happen. So we have to keep in mind that there will be a supply concern. It may arrive in future whenever there will be some disruptions, and it will happen. And if it may not happen in 10, 15 years, 20 years, but it may happen. So this is one of the concern that in the long run we can see gold's price continue to move higher. So now back to the current level. So if we compare with these two charts, this is one basically the 222.23 and the quarterly and quarterly this quarter 24 compared with 24, what we just passed. So if we go to the overall demand supply in the 2022-23, you can see the physical demand. This is the supply side and this is the physical. The numbers are getting changed. The supply side, if you can see, so supply remain constant. There is not much of a rise on the supply side. This supply is a combination of both the mines and the scrap. So this supply side, there is no major improvement happened. But in the demand side, we can see this is our data. There could be some analysis which could show some other numbers, but this is fairly our data, and this is based on our analysis. We could see there is a quite a sizable drop in the demand sides compared to the supply side. The physical demand from 4,200 tons, so it has come down a little lower to 4,000 tons. So this is we have observed in last year. Coming to this year, first quarter, there is not much of a difference on the demand side. It is quite flat. On the supply side also, we have observed some upticks on the supply side, understandably so, considering the price, current high price. There is a constant effort to cash in from the supplier. So this it's just an estimated number as of now, and we will revise the Q1 number when we get all the information. So this is estimated numbers. It could rise from the current level as well. But overall, what we could see कि इधर में जो दिख रहा है कि supply बढ़ा है on a quarter-on-quarter basis. So this is on the supply side. We can see the gold currently stands. As I said, there is no major, supply is remain constant. A little bit of higher side because of the current high price. Some of the things are getting. Some of the suppliers wanted to cash in these current high price. So other than that, this higher supply is equally concerning for the market as well in the short to medium term, because we have to see can we catch up if the demand can catch up the supply. In my experience, what we have observed, commodity prices moves more than on the supply side shock than the demand side. So it is very evident. I can give one example. In 2 years back, when the first time this crisis started in Russia, Ukraine, that time we have seen suddenly 2 to 3 days, and PGM prices, especially palladium moved up like anything. But when the market realized that there is no major supply concern coming for palladium, the price gradually corrected equally sharply. So that is what market usually respond very fast when there is a concern on the supply side. So at present, in a net basis, we are not seeing any major supply shock. In future also, in short to medium term, in a very long term basis, yes, will be a concern on the supply side because of the aging mines, and no new mines as of now are expected to coming
I mean the large mines I am talking, not the artisanal small mines, etc. So net what we can see, there is a no major supply shock coming in short to medium term. Now let's go to the investment side, or the physical, also the little bit of the physical demand side. So on the physical demand side, I as a proxy I am using India and China. So before I speak about China, so let's go little bit what our data is showing. Uh, just a minute, some so this is GDP number of China. So you can see the graph here. This is Chinese GDP number here, the red line you can see. So, or you can see here, it will be better. So this is the yellow line. So Chinese GDP number, you can see China is not what China used to be. We have to keep it in mind. China what used to be. So this is the actual number coming. So flat, what from Q2 2023, Chinese economy has been on the declining side with a little uptick in the current. But overall, if we see from the Q2 22 level, so this is actually, it has grown up, but it is not like what China used to be. So this factor will continue to impact the what we believe that, and this factor will continue to impact the demand side, because after the real estate shock in China, there is a concerned approach. Whatever the media can say anything, but what we have seen, um, there is a concern. There is a the Chinese people uh, to buy these luxury goods like gold, jewelry, etc. There is a they put some kind of कि उनको नहीं चाहिए आपको उसको they have to save more money, and this is actually created a big kind of uncertainty in their mind कि तो ये factor continue रहेगा मैं हमारे हिसाब से. So retail jewelry consumption, if we see in Chinese side, it is actually came down in last 5 years. It is not growing. Whatever it was, it is constantly around 600 and little below. So it has grown up in 2023, of course, but it is we are not expecting too much rise from this level. So uh, either it will be, we are expecting around 550 to maximum 630, 650. It's not beyond. So it is kind of, naturally it will remain. We are not expecting anything above 700 odd tons in coming years in China, considering the current economic slowdown. Coming to India, if we see on the retail investment side, it is the same. It has uptick. Yes, last year it uptick was there, but we are not seeing a very major pickup from the current level. So the last 5 years basis, around 200 to 200 odd tons, or it may come down further. If I will not be surprised in the next 2-3 years, if the investment demand comes, apart from gold ETF, investment demand it comes down around 200 odd tons. Coming to Indian side, I am little bullish on India because this year we are expecting good monsoon, though price is very high. But this year, in our estimate, what our data suggesting, we are expecting, because this year the weather forecast is showing we are entering to La Nina period. La Nina means we will have a very good rain spell this year. So rainfall will be good. It will be as per the long-term average. So we are expecting a good agricultural production after 2 years. That will bring obviously some money into when this harvest takes place. उसका कुछ तो फायदा, अच्छा अच्छा खासा फायदा इस पर गोल्ड सेक्टर में होने वाला है. So other than that, investment demand also is, since the economy is growing, we are also expecting some good demand despite the high price. We are expecting the demand to grow on the investment side as well. So
Other than that, in the rest of the world, in the rest of the Asia, in the Asian physical market, we are not anticipating any major demand increase. So which precisely means physical demand will continue to remain at a very uh, with a 2-3% up or down on a year-to-year basis, but not major thrust is coming on the demand side from the investment from the physical demand as far as physical demand is concerned. Now coming to the ETF, this is one area that is also getting very interesting. If we see the developed market like America and Europe, you could see the you could see the you could see how it is how the graph is showing. Obviously, this is the impact of 2023's figure is uh, sorry, this is China's number. Sorry. So if you see the North America's figure here, so we have seen the physical ETFs are continuously. We have a continuous 2 years of negative outflow, continuous 2 years of outflow in gold ETF, and this is understandably so because ETF hedge funds are making booking profits as the price has substantially risen from the 1900 odd level. So same is true with Europe. It is coming down consistently. Only the good thing is that it is very small in number, but Asian market, we are expecting ETF to grow in the Asian market because the kind of, despite the physical demand, there are, we have observed some kind of interest, especially from the young workforce to invest alternatively to physical instead of physical asset. They wanted to invest in the digital as financial assets. So we believe that both in India, like China, India, this gold ETF, it will it will attract very good, very good investors in this sector. So Asia is the one place where this is going to this will be growing. But other than that, it is to be seen how, because at present the SPDR, if I take for example, the current asset is around somewhere around 860, 850 tons. So it means that when SPDR is not getting enough demand. So there is a strong possibility that ETF may suffer in the developed market. Coming to the official sector, this is the one that is obviously this sector will here to stay. Official sector, if we see the real data on the official sector, so official sector demand will continue because because many central bank. This is basically the central bank buying. The central bank buying is those 2023. It is little lower than 2022, but we believe that the central bank buying will continue to remain more around five uh, at least 600 to 700 tons per year on an average, because many of the banks, like for example, if I take for country like India, RBI is consistently buying. Reason simply because as every central bank usually keeps a certain balance between the US dollar treasury and the gold. So normally they keep around 7, 8, or 10% of their, or maybe in some cases more than that. So they maintain that ratio, and as and when this forex reserve increase, central bank will continue to buy that because of the to maintain that ratio. So, and of course, there is a wide cry for diversification of the forex reserve. So we believe this central bank buying will continue. That will provide a good boost to the price in the long run, medium to long run. So this is the fundamental side at present is talking. So now move to some of the pricing aspect what we could see here. So if we let me go to some chart what the chart is suggesting.
So this is gold. Gold is white, and the US dollar is yellow. So what you can see normally, gold and US dollar has the inverse relationship, but here you can see both dollar and gold is rising. But for the first time here, there are some kind of, here in the first time after a few months, here you can see some kind of original relationship is coming back. So dollar has risen to 105 and gold has crashed from this level. So this is what actually the current situation stands. So if you ask me the why the gold, if this physical buying is not there, how the gold is going up? So the answer must be lying here in this CFTC chart. So CFTC chart, you can swing that this green is comes as a long and red is short, and the white indicates the net. So if you can see, the net long remains even today substantially higher compared to the its historical average. So this is the longs. If you can see, current long stands at 680 lots. So this is substantially higher even today. So it is even after this current fall, market has is we can't say that the market current price is bearish even after 100 odd dollars fall, more than $100 fall. So we cannot say market has turned into bearish grip fully because of this. So what happened actually after post COVID? It is very unusual thing happened. United States has got 1/3 of the global money after this COVID area. So what actually earlier the emerging markets, basically China, what the fund foreign direct investment I am talking about, what the FDI, it is I am talking about basis the International Monetary Fund data. तो जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डायरेक्ट के हिसाब से, तो चाइना में जो फंड नॉर्मली मिलता था वो यूएस में काफी बेसिकली सेमीकंडक्टर एंड द रिन्यूएबल सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट यूएस में गया है, and the money supply was remain extremely strong on the financial market also. High interest rate was very high. So ये क्या होता है जब मैं अगर किसी एसेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो साइमल्टेनियसली, ये मेरा मानना है कि हम लोग देखे हैं कि थोड़ा एसेट डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से it goes to the other asset, and gold is a natural choice obviously as a insurance. So अभी ये जो राइज हम लोगों ने देखा है फिनेंशियल मार्केट में, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी इसको बाई किया गया। तो ये जो नेट लॉन्ग अभी खड़ा है ना, ये सब्सटेंशियली हायर है। नॉर्मली ऐसा कंडीशन पे होता नहीं है जो मैंने अभी दिखाया, हाई इंटरेस्ट रेट, तेजी, डॉलर में तेजी, लेकिन ये हुआ है इस बार। तो इसीलिए ये जो गोल्ड का जो हम लोगों ने देखा, इट हैज गॉन अप लाइक एनीथिंग, बिकॉज नॉर्मली पहले जो होता है, जो ईटीएफ में हम लोगों ने देखा, ईटीएफ में जब बाइंग होता है गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन इस बार हुआ नहीं। ईटीएफ में ईटीएफ इज कंटिन्यूअसली सेलिंग। ईटीएफ में हर मंथ आफ्टर मंथ वी आर गेटिंग ए नेट आउटफ्लो। तो फिर गोल्ड ऊपर कैसे जा रहा है? तो ये शायद यही एक है, हाँ, यही एक चीज है कि इसी चीज को, इसी वजह से गोल्ड अभी ऊपर चढ़ा है। तो ये जो स्पेकुलेटिव ड्राइव है, ये जो स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव ड्राइव है, ये मार्केट में एक तरफ से देखा जाए, और भी सामने आगे तरफ जब भी कुछ खराब खबर आ जाए मार्केट, इफ देयर इज एनी बैड न्यूज कम्स, बिकॉज इंटरेस्ट रेट तो यूएस अभी सितंबर अंटिल इलेक्शन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर कट इन इंटरेस्ट रेट, और काफी कुछ इलेक्शन सामने है, तो काफी कुछ मेजर कुछ इवेंट होने वाला नहीं है। सो एज सो आई एम नॉट, सो इसीलिए कि ये जो लॉन्ग पोजीशन खड़ी है, ये मार्केट के लिए बहुत ही खतरनाक है। कुछ भी अगर कुछ नेगेटिव खबर, अच्छा खबर इकोनॉमी के लिए आ जाए, कि जो गोल्ड के लिए नेगेटिव हो, आई डोंट नो व्हाट कैन हैपन, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्पेकुलेटिव नेचर प्रेजेंट, कि मार्केट किस पे रिएक्ट करेगा, जीडीपी पे करेक्ट करेगा। जीडीपी अगर देखा जाए तो इट इज, यूएस इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 1.3% एज पर आवर
as per our estimate, US GDP is growing at 1.3% this year. So, uh, so sorry, let me put the US GDP data now. ये जो यूएस जीडीपी ये जो 1.3% के आसपास इसका फर्स्ट क्वार्टर में इसका एस्टिमेट है अभी तक, जो लास्ट क्वार्टर में करीब 3.4% तक एक्चुअल आया था। तो ये जो है, ये अंडर सर्टेन दिस सर्कमस्टेंस हाउ गोल्ड विल रिएक्ट, हाउ द इंटरेस्ट रेट विल प्ले, हाउ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्ले, इट इज सारा का सारा चीज स्पेकुलेटिव है। बट ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो गोल्ड में फिर से एक अच्छा सा मंदी आ सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आ सकता है। तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस आएगा ही, लेकिन ये जो करेंट जो डेटा जो हमको दिखता है, डेटा के हिसाब से दिस इज ए वेरी डेंजरसली पॉइज्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीमली इतना इतने जो लॉन्ग खड़ा है, ये लॉन्ग अगर काटना शुरू हो गया, अगर 100-150 लॉट भी अगर काटता है एक ही हफ्ता में, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये चीज को हमको ध्यान पे रखने का है कि ये कॉमेक्स में क्या हो रहा है। बाकी टेक्निकली जो हमको दिखता है, ये जो अगर टेक्निकल चार्ट में हम लोग फिर से देखें, तो अगर यूएस ट्रेजरी को भी देखे डेक्स से के हिसाब से, अगर हम लोग अभी मैं डॉलर को निकाल दिया, अभी यूएस ट्रेजरी 10 ईयर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट यू कैन सी, सो ये 4.5% के आसपास, सॉरी 4.2% के आसपास है, दिख रहा है अभी। तो ये सारा चीज जो है, ये अभी भी ये ये जो चीज है, ये कुछ भी अगर कुछ भी अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड के लिए बहुत ही इसका इम्पैक्ट आ सकता है प्राइस में। तो इसीलिए ज्यादा बियरिश भी नहीं होना चाहिए, बुलिश भी नहीं होना चाहिए। अभी का जो करंट सिचुएशन है, एज पर द मार्केट यू शुड टेक योर कॉल, बिकॉज ये जो स्पेकुलेटिव ड्राइव बहुत ज्यादा है, तो इसलिए रिएक्शन भी बहुत तेज होता है। तो ये जो टिल यूएस इलेक्शन एंड्स, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वोलाटिलिटी टू कंटिन्यू। बाकी देखा जाए तो $2000 के आसपास, $2000 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है इन द मिड टर्म टिल दिसंबर। और ऊपर में मुझे लगता नहीं है कि मुझे लगता है कि जो अभी हाई बनाया 24, 25, 30 का जो भी हाई बनाया फिलहाल, इसको अभी इस साल और ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो आ, ये जो ड्राइव था उसको कंटिन्यू करने के लिए जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम काफी हद तक डिक्रीज हो गया। तो मुझे लगता नहीं है कि बिकॉज इसको फिर से वापस ये मोमेंटम को लाने के लिए मुझे नहीं लगता दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ मार्केट करेंटली हैज। तो नेट नेट ये जो आगे ये अप टू दिसंबर व्हाट आई कैन से कि मार्केट विल रिमेन टेंटेटिव। और अगर मार्केट में और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये भी कोई आई I मीन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो दैट्स माय टेक फॉर द डे, फॉर नाउ। सो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं कि आई कैन आंसर। 15 मिनट है हमारे पास, सो वी कैन हैव सम क्वेश्चंस इफ यू वांट। किसी का कोई सवाल है, आप हैंड रेस कीजिए, आपको अनम्यूट कर देंगे। किसी को कोई क्वेश्चन? सो
हाँ किरण जी हेलो, पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर बोलिए। कैन वी से कि जो अभी ऑनगोइंग जैसे वॉर वॉर जो चालू है, लाइक एनी चेंजेस इन द लाइक कमिंग 5 to 6 months डाउन द लाइन, सपोज अगर वॉर में प्रेजेंट वॉर सिचुएशन में कुछ चेंजेस होते तो दैट विल अफेक्ट द गोल्ड प्राइस? I don't think so, nothing, because unless and until any new conflict comes and very major government like US, China involved directly, I don't think other than that anything changes coming in near future. और देखा जाए तो ये जो वॉर का जो है, इट इज मोर देन ए इन आवर हिस्टोरिकल एनालिसिस, when the impact comes, when it starts, something geopolitical tension comes, it dies down in a week or 2 weeks time. After that fundamental comes back, because historically I have observed, there could be some, you can see here and there, people often talk about, quote about the war, etc., geopolitics, but fundamentally market में कुछ, whatever its problem comes, it is market turns comes back to the its fundamental. Fundamental is basically we have to watch this, what is coming, what is happening in US economy front, since gold is priced in dollar. That's the most important. What can be राइट। seen? हाँ। What can be seen? Saudi Arabia ने said that there could be some changes in the oil trade. It should not be exclusively on the US dollar basis. So that is that one thing, that factor we have to see how it turns around, because as of now we cannot say anything, because forward contracts already booked in US dollar. So we have to see how that story turns around. So also regarding like this ditching of petro US dollar currency, and then like taking into account BRICS. Yeah, that's what I mean. But as of immediately, it will not happen, because normally the oil traders, they book on a few quarters forward basis, and it is booked in US dollars. So we have to see how it turns around. There is no data on that. Only the Saudi Arabia, some media, Saudi Arabia said that. So we have to wait and watch. We cannot speculate on that. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. गुड आफ्टरनून सर। सर इन द स्टार्ट आपने कहा कि चाइना अभी वो चाइना नहीं रहा, यानी Yeah. जो दो मतलब आप बोल रहे हैं कि चाइना अभी बहुत पावरफुल हो गया है No, मॉनिटरी no. फाइनेंस इकोनॉमिकली, या क्या No, no. उसका मेरा थोड़ा? बोलने का मतलब है, China was growing more than 11-12% at some point of time. Now it is growing quarterly basis, 11 more than 11-12% it was growing. Now China is growing at a 5 to 6% around. So it means that the strength of Chinese economy, the that growth actually has come down. But at current size of the Chinese economy, even 5% is higher, but still it is not strong enough to drive the commodity prices what it used to do in 10 years back. That is what I meant. Even Chinese retail buyers also, they are not going on a buying frenzy to buy, the luxury goods. So that is also impacted. That is why I said we are not expecting a major rise in the Chinese gold demand in India in coming days. क्या होता है, एक there is a set. See, as I said, gold 600 tons to 620 are around 150 tons per quarter and an average Chinese gold demand coming. So it will not go to 200 tons on an average quarterly. That is a rise. That is not going to happen. So because there is not enough confidence of Chinese buyers at present to go for that. So that's what I meant. Devajit sir, we have a question in the chat box. Request you to kindly please check it. आप थोड़ा बोलो ना, चैट बॉक्स मेरे लिए खोलना थोड़ा मुश्किल है इधर से. आई एम नॉट वेरी savvy to this. Okay, I can see. Okay, where do we see the gold price in INR? What is your take on Indian rupee in H2 of 2024 and its impact on gold in INR terms? INR, I am not going to see any major devaluation of INR against US dollar.
So basis that, I don't track on a rupee basis, on a daily rupee basis. So what's the current conversion rate is going on? I am not seeing any major shift in that, unless and until there is some local factors like market goes to deep discount or etc. So as I said, we are expecting a very good monsoon this year. So that impact will be felt in the market when the harvest starts. So keep your thumbs up. I am very hopeful for the Q4. Demand will remain huge in Q4 and the Q1 2025. Anyone have a question? किसी का कोई सवाल है आप पूछिए, अदरवाइज सेशन क्लोज कर। I think I no think we're questions. done. Yeah. There is no question. So thank you to all, and thank you Devajit ji for Thank the you. informing us. So we Thank play you. one video. We play one video, World Gold Council, and after that we can close the session. Sure. What does your investment portfolio look like without gold? Incomplete. Why? Because as a gold owner, you have the power to make bold decisions. To balance risks and returns. The power to buy and sell right at your fingertips. Because as a gold owner, you can secure your investments with your strategic advantage. Gold. Without which your portfolio is incomplete. Power your portfolio with gold. World Gold Council. So thank you all the participants, and once again thank you Devajit ji. Thank you very much to everybody to join this session. Thank you so much. Thanks, Saurabh.